Welcome to EduRev. Hello everyone, welcome to EduRev. My name is Khushbu Gupta and I am your chemistry educator. Today I am going to begin with a topic which is some basic concepts of chemistry. And this topic is very important in order to build some good concepts. So let us begin this topic with a fun fact. Do you know that there is a metal called gallium that can even melt in your hand? Wow, isn't this fascinating? Because generally we see that metals are hard in nature, but gallium is such a metal which is soft due to its low melting point. इसके कम मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से अगर आप इस मेटल को अपने पाम में लो, जैसे इस पिक्चर में शोन है, तो इवेंचुअली ड्यू टू द हीट ऑफ योर हैंड्स इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. वाओ, व्हाट अ फन फैक्ट. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अब हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे. सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज मैटर, व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर and chemical states of matter. So let us proceed one by one. So what is chemistry? If I have to define it in a simple way, I would say that chemistry is a branch of science that deals with the composition, properties and interaction of matter. Right? So इसको अच्छे से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि matter actually है क्या. Right? तो चलिए देखते हैं. What is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. That thing is called as matter. Examples कैसे हुए? Like milk, coke, bell, balloon, pear, books, hot air balloon and pen. So in all the cases, if you observe, all of them occupy space and they possess some mass. Right? अब matter बना किन चीजों से होता है? So matter is made up of tiny particles called as atoms and molecules. If you want to understand in a better way, it is like, suppose मेरी एक building है which is matter. ठीक है? So हर building को बनाने के लिए आपको bricks चाहिए होती है. ठीक है? उन्हीं को आप join करके building बनाते हो. तो ये जो bricks हैं ये मेरी कहलाएंगी atoms या molecules. ठीक है. So let us now talk about classification of matter. So matter can be classified on the basis of physical states and chemical states. In the physical states, we generally study about solids, liquids and gases. There are other physical states present as well, but mostly we study all these three states. In the chemical states, we have mixtures and we have pure substances. So mixtures can be of two types, which is homogeneous and heterogeneous. And under pure substances, we will talk about elements and compounds. Right? So let us first discuss about physical states of matter. So physical states of matter में हम generally पढ़ेंगे solids, liquids और gases के बारे में. ठीक है? तो solids में देखते हैं क्या होता है. In case of solids, the particles are very tightly packed. What does this mean? If you see this picture, you can see that in case of solids, if these are my particles, they are present very close to each other. Right? So there is no freedom of movement. ठीक है? In case of liquids, particles are closely packed. So liquid के केस में भी particles close होते हैं but not as tight as solids. Like you can see in this picture. Suppose if I draw here, so particles are close to each other. Right?
So there is some freedom of movement. But in case of gases, particles are loosely packed, as you can see in the picture as well. Whereas in case of gases, particles बहुत दूर दूर present होते हैं. ठीक है. So यहाँ पे freedom of movement होती है. Freedom of movement is there. ठीक है. So अगर आपको इतना समझ आ गया है तो क्या आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं that why gases are compressible? Yes, since the particles are very loosely packed in case of gases, that is why gases can be easily compressed, right? What another properties about solids can we say that they have definite shape and volume. In case of liquid, they have definite volume but not shape. They take the shape of container. So whereas in case of gases, they neither have definite shape nor definite volume. Let me explain this with an example. So suppose in case of solid, we know that table is a solid, right? Let me draw this table here. For example, this is a table. Now you can see that this table has a definite shape and also it occupies a definite volume, right? Whereas in case of liquid, suppose we know that water is a liquid, right? I am indicating water as this, in this, under this circle, right? Suppose I have taken 100 ml water, right? So I have two containers. One container is of this shape and another container is of round shape, right? So if you pour this water in this container or this container, it takes the shape of the container. But in both the containers, you have 100 ml of water only. That is why I said that liquids have definite volume but not shape, right? In case of gases, suppose I say that helium is a gas, right? And you know that balloons are filled with helium. So if I have a balloon of this oval shape or if I have a balloon of this heart shape, when you fill in helium into this, it takes the shape of those particular balloons, right? And they both have a different volume. Like this can contain X gram of helium while this can contain Y gram of helium, right? That is why gases neither have definite shape nor they have definite volume. So another important property is the interconvertibility of physical states of matter. So like what I said that solid can be converted to a liquid by heating. Similarly, liquid can be converted to gas by heating. And likewise, gases can be converted to liquid and liquid can be converted to solid by cooling. How? Let us take an example of water. You know that the water in its natural state is liquid, right? I am taking this suppose as water. So water is liquid in nature. If you freeze it or if you cool it down, then what do you get? Ice. The solid state of water is called as ice. And similarly, if you heat ice or if you melt it, then you get liquid water. Similarly, if you go on heating water, then you see that water starts boiling
and it's get converted to steam. So steam is the gaseous state of water, and similarly if you cool down this steam, then you can obtain water, right? So I can say that physical states of matter are interconvertible in nature. So now let us discuss about chemical states of matter. So it can be classified as mixtures and as pure substances. Mixtures can be of two types, that is homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures, whereas pure substances can be elements or compounds. What is the difference between these two is, in case of mixtures, substances are present in any ratio. This is important. कोई भी रेशियो में सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकती है, whereas in case of pure substances, the substances are present in fixed ratio. ठीक है, इनके केस में रेशियो फिक्स्ड रहता है. अब मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा, whereas pure substances को आप फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते. So let us discuss each of these one by one. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट मिक्सचर्स. सो हमें क्या पता लगा कि इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस एंड इट कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो. एक एग्जांपल लेते हैं जैसे टी का. ठीक है, अब टी में आपके पास टी लीव्स होती हैं जब आप टी बनाते हैं, राइट. शुगर डालते हैं, मिल्क डालते हैं, ठीक है, वाटर डालते हैं आप इसमें, राइट. तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इसको आप कैसे भी रेशियो में डाल सकते हो, है ना. हर कोई अपने तरीके से चाय को बनाएगा, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर. नाउ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, आई हैव कोटेड दीज टू एग्जांपल्स. लेट मी एक्सप्लेन. फर्स्ट में आई हैव टेकन शुगर इन वाटर. तो सपोज मैंने यहाँ पे वाटर लिया, या दिस इज वाटर, और मैंने ऊपर से इसमें शुगर डाली. ठीक है, और जब आप शुगर डालते हो, आप ये घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो, और थोड़ी देर बाद जब आप इसको मिक्स करते हो तो क्या होता है, इट डिसॉल्व्स, आपको एक क्लियर सोल्यूशन मिलता है. ठीक है, सो होमोजेनियस मिक्सचर्स में होता क्या है, द कंपोनेंट्स मिक्स वेल with each other to form a uniform solution. ठीक है, और इधर मैं देखूं अगर हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल में मैंने क्या लिया, वाटर लिया अगेन, और इसमें अब मैंने सैंड डाल दी. ठीक है, तो आप अगर इसको अच्छे से मिक्स भी कर लोगे, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि जो ये सैंड है इट सेटल्स इन द बॉटम, राइट. तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स वेल विद ईच अदर. ठीक है, और आप कभी कभी दोनों कंपोनेंट्स को देख भी पाते हो, जैसे सैंड एंड वाटर का एग्जांपल हमने ले लिया. ठीक है, अगर आपको होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स समझ आ गए हैं तो डू ट्राई दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, इज लेमनेड होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस? Yes, lemonade is a homogeneous mixture because you mix, suppose, lemon, sugar and water into it and it completely forms a uniform solution, right? So that is why we said that lemonade is a type of homogeneous mixture. So now let us understand about elements which comes under pure substances. So what are elements? Elements are pure substances that contain only one type of particle. ठीक है, अब वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है और वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है. पहले समझ लेते हैं मॉलिक्यूल होता क्या है. जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल. दोनों का एग्जाम्पल एक एक करके समझते हैं. जैसे एग्जाम्पल में मैंने ले लिया गोल्ड. ठीक है, so we know that gold is an element represented by a chemical symbol Au,
So gold will contain gold atoms only. If you will think that it contains copper, silver atoms, then it won't be correct. Gold is an element, and as per the definition, it contains only one type of particle. ठीक है? Molecule में कैसे example होगा? So there are some elements which are found as in the form of a molecule. Example जैसे हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं. ठीक है? अब होता क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करके एक H2 का मॉलिक्यूल बनाता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज ऑल्सो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड दे फॉर्म इज वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस. राइट. सिमिलरली ऑक्सीजन भी कैसे एग्जिस्ट करता है, O2. Nitrogen exists as N2. Another thing that you must know that atoms of different elements are different in nature. Suppose मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, एक सोडियम का एटम है, एक मेरे पास लीथियम का एटम है. ठीक है, ये सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज और नेचर डिफरेंट होगा और इसी के बेसिस पे ही आप एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्लासिफाई करते हैं. राइट. So let us now talk about compounds. When two or more different elements combine in a particular ratio, a molecule of compound is formed. Let us understand this definition with an example. I am taking an example of water, and we know that the formula of water is H2O. Now, what water is composed of? It is composed of hydrogen element and it is composed of oxygen element. So as per the definition, two or more different elements must combine. So this is happening, right? But they combine in a particular ratio, meaning यहाँ पे दो एटम ऑफ हाइड्रोजन यूज हुए हैं और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन. दिस रेशियो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशियो इज 2:1. You cannot say that this ratio can be like H3O, H2O2. No. Right? So पर्टिकुलर रेशियो में ही कंबाइन करते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स. तो हमें मिलता क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल जाएगा जब ये कंबाइन करेंगे. ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हुआ, जैसे हम ले लेते हैं ग्लूकोज का एग्जाम्पल. हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कि प्लांट्स सिंथेसाइज ग्लूकोज विच इज C6H12O6. राइट. So this also contains 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms and 6 oxygen atoms. This ratio is fixed, right? So I hope whatever concepts are discussed in this video are clear to you. I would strongly recommend you all to get yourself enrolled to EduRef Infinity program. Some of the key features being that you will get access to solve mock test after watching each video. Plus, you can have a library of over 10,000 questions for practice, and also you can get access to all subjects in just one subscription. And all the content prepared is verified by high quality teachers. Thank you.